Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. This is MR Official. Once again, you're watching MR Official. Before teaching you, I would like to tell you, if you are new on my YouTube channel, kindly subscribe the YouTube channel and press the bell icon to get more emotional and very motivated videos. So today I'm here to teach you about the structure. What is structure actually? What is structure? Structure क्या है? The structure are used to express the beauty of any language. किसी भी ज़ुबान की खूबसूरती को बयान करने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं. We use the structures to express the beauty of any language, whether that's English, whether that's Balochi, Bravi, Pashto, Punjabi, whatever that is. We use the structures to express the beauty of any language. Structure 1. सो आज जो है मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर 1 के बारे में पढ़ाऊंगा जो यूज टू. दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर. ओके, आई विल टीच यू द कंप्लीट स्ट्रक्चर्स. इट इज़ अ स्ट्रक्चर विच इज़ यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट्स एंड एक्शंस विच वी डोंट परफॉर्म नाउ. ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग माजी के आदात और आमाल जो हम लोग माजी में करते हैं उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं. सपोज यू विल गेट इट इन एग्जाम्पल्स. स्ट्रक्चर जो माजी में आपने एक्शंस किया हो या माजी में आपने हैबिट्स, आपके जो हैबिट्स है उसके लिए हम लोग यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, दे यूज टू प्ले हॉकी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज सब्जेक्ट प्लस स्ट्रक्चर यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. वी यूज टू ड्रिंक द मिल्क. She used to learn Persian language. You can use like this as well. Negative sentence. If you want to make sentence that did not used to play hockey, it's past. Whenever you are about to change it in negative, you have to use did not, because they did not used to play hockey. We did not used to drink the milk. She did not used to learn Persian language. Okay. After did not, you have to use first form of verb as your rules and regulation of past indefinite tense. And interrogative sentence. Did they use to play hockey? Did we use to drink the milk? Did she use to learn Persian language? I hope you got it, whatever I taught you. What is structure? Structure हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं and used to हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं. And if you guys are having any confusion, any question or query, you can ask in the comment section. Okay guys, bye bye, see you in the next lesson.